Hola amigos and welcome back to the channel. So guys, आज का वीडियो होने वाला है सुपर डुपर अमेजिंग बिकॉज आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 डिफरेंट इंटर्नशिप्स फ्रॉम इंडियाज टॉप इंस्टीट्यूट्स. ओके, so let's start the video. Before that, don't forget to like, share and subscribe to the channel. एंड हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करना मत भूलना, जहाँ पे हम देते रहते हैं डेली अपडेट्स ऑफ डिफरेंट इंटर्नशिप कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो गाइज, फर्स्ट इंटर्नशिप है IIIT दिल्ली से. So this is summer internship offered at IIIT Delhi 2022. So each year their faculty members invest their time, efforts and innovation in some great real-time projects, and the projects are listed below. Okay, and the student can apply for max 3 projects and the last date to apply. Okay, तो हम लोग मैक्स 3 प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड लास्ट डेट इज़ 31 मार्च. रिजल्ट डिस्प्ले होगा 15 अप्रैल को एंड इंटर्नशिप स्टार्ट होगी 6 मई से. सो एक या 2 दिन बचे सिर्फ, सो यू कैन अप्लाई बिफोर दैट. सो द प्रोसेस इज दैट यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट दिए हुए, हम लोग को सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, अपना अकाउंट बनाना है एंड अपने रजिस्टर करके अपने डिटेल्स दे देने. ओके, so for biotech students or life science students, there are brain correlation of affective states in autism, and one more is there insect specimen preparation and pinning. I found only 2. You can read all this thing and check if there are any other projects. So एक दिन बाकी है, आज के आज ही अप्लाई कर दीजिए. सो द नेक्स्ट इंटर्नशिप इज फ्रॉम समर रिसर्च इंटर्नशिप फ्रॉम IIT पलक्कड़ केरला. सो दे आर सेइंग, तो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है साइंस, इंजीनियरिंग एंड ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम इज ओपन टू पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 4th and 5th year student of integrated master's program, and those who are in the 3rd and 4th year of their BTech degree, they can also apply. Okay, the application is to be submitted online at the portal available at homepage IIT Palakkad, and selection will be made on the basis of academic records, aptitude, research accomplishments and area of research interest. Okay, so यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है ऑफ 6,000 रुपीज़ पर मंथ. सो एप्लीकेशन पोर्टल 17th मार्च से ओपन है. डेडलाइन मीन्स लास्ट डेट इज 10th अप्रैल एंड ये सब डेट्स है. प्रोग्राम स्टार्ट होगा 1st जून से. ओके, सो दीज आर द प्रोजेक्ट एरियाज. यहाँ पे मेरे को ज़्यादा नहीं मिले, बट दीज आर सम लाइक बायोसेंसर्स एंड आफ्टर like in chemistry, fluorescence spectroscopy, chemical biology of polyphenols. If you are interested in these things, so if you are interested in these areas, you can apply for this. अप्लाई करने के लिए आपको बस यहाँ पे आपका न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा and fill your details and then apply. After that, third internship is from IIT Jammu. Okay, let's check the details. So the eligibility criteria is the preference will be given to the students who have good programming technical skills and are willing to solve real world. So if you are end of your 3rd year of BTech and the 1st year of MSc MTech, then you can apply for this internship. यहाँ पे उन्होंने प्रोसीजर दी है कैसे अप्लाई करना है. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट. दिस इज द लास्ट डेट 14th अप्रैल and the internship is fully offline. Okay, और आप
आपको यहाँ पे स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है, विच इज़ स्टाइपेंड ऑफ ₹2500 per week. Okay, so I'm just going through. You read all the details, guys, carefully. Let's see the project areas. These are some project areas. So for us there are deep learning enabled smartphone diagnostic and emotion and cognition, which I found related to our field. You can check deeply if there any other field related to us. For this internship you need a bona fide certificate and the declaration from parents, which format is given here, and the last date is 14th of April. Okay, so if you're interested in projects you can apply for this. The last internship is from Indian Institute of Information Technology, Allahabad, which is IIT Allahabad. So this is online summer internship program, and they are saying last date is 16th of May 2022 and the start date of internship is 1st of June. Okay, so they are saying students should directly contact to the faculty member through email on their email ID for their consent. तो आपको यहाँ के जो फैकल्टीज़ है उनके प्रोजेक्ट्स चेक करने हैं, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो तो उस फैकल्टी को आपको पर्सनली ईमेल करना है. ईमेल आईडी उनकी वेबसाइट पे दी हुई है, विच आई शो यू. और जब आपको उनका रिप्लाई आएगा या और वी कैन से दैट कंसेंट, so then you can go forward for the application details or registration detail. For the registration you have to pay the fees of rupees 5,000, okay, plus some GST charge 18%. So we have to click here. After that, here I am the Department of Applied Sciences of IIT Allahabad. Here you can see the different faculties and their research areas. If let's say I have interest in this thing, so let's click here, and here I can get his mail ID or the contact details. Okay, so यहाँ पे आपको mail करना है और when you get consent or reply back, then only you can register for it. Okay, so these are some research internships. If you are really interested in these programs or these projects, so you should apply for this internship. And before applying, read every detail, read everything, every conditions carefully, and then apply for it. If you want a detailed video for any of this internship or any of this program, just comment down below and I'll give you the detailed video, how to apply, how to send the email, everything. Then just comment down below if you want it. Okay, so these are the 4 internships for today. If you like it, don't forget to like the video, share with your friends, with your siblings, with everyone, and subscribe to your favorite channel Biotechnological, and I'll see you guys in the next video. Bye.